पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हर ताकत अपनी एक कीमत मांगती है, पर आज बात ताकत की नहीं है। आज बात उन चीजों की है जो पीछे रह जाती है। कुछ रास्ते इंसान को मजबूत बनाते हैं और कुछ उसे तोड़ देते हैं। सेबेस्टियन अब भी जवाब ढूंढ रहा है, पर हर नया जवाब उसे खुद से और दूर ले जा रहा है। कभी कभी अंधेरा एक पल में ही नहीं आता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, एक चॉइस के साथ और एक समझौते के साथ। और फिर एक दिन इंसान मुड़कर देखता है और पहचान ही नहीं पाता कि वो कितना बदल चुका है। आज हम वक्त के पीछे छुपे सच को देखेंगे, पुरानी यादें, पुराने दर्द और वो खामोशियां जो कभी सच में खामोश थी ही नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वो अपना निशान छोड़ती है। मैं हूं द पेपर फेस और ये है इस कहानी का 16वां एपिसोड। तो हमारा थर्ड ट्रायल कंप्लीट करने के बाद और सालाज़ार स्लिदरिन के स्क्रिप्टोरियम से होने के बाद हमने बम्बार्डा ये स्पेल सीख लिया है। अभी हम चाहते हैं सेबेस्टियन से मिलने, बिकॉज वो बोल रहा है कि उसने जो बुक हमें मिली स्लिदरिन के स्क्रिप्टोरियम से वो उन्होंने रीड कर ली है। तो लेट्स सी उनको उससे क्या मिला है। तो चलो जाके उनसे एक बार मिल लेते हैं। तो हमें सेबेस्टियन ने अंडरक्रॉफ्ट में मिलने बुलाया था रिलेटेड टू वो बुक। तो चलो जाके देखते हैं कि इन्हें क्या मिला है वो बुक में से। You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. वाह, तो हम यहाँ पे आए और हमने सेबेस्टियन से बात की। उसके बाद हमें पता चला कि सेबेस्टियन ने वो बुक पढ़ी और बुक में लिखा गया है कि जब सालाज़ार स्लिदरिन स्कूल में थे तब स्कूल में अनफॉरगिवेबल कर्सेस के बारे में सिखाना काफ़ी लीगल था और कोई ऐसा ये नहीं था कि भाई इसको नहीं सिखा सकते। बियॉन्ड दैट बुक में उनको ये भी मिला दैट कोई एक ऐसा रेलिक है जो अनफॉरगिवेबल कर्सेस जो है, जो अक्षम्य श्राप है, उनको रिवर्स करने की ताकत रखता है। मतलब अगर कोई किसी बंदे के ऊपर कोई ऐसा श्राप किया गया हो तो वो रेलिक उसको रिवर्स कर सकता है। तो सेबेस्टियन को लगता है कि वो शायद उसकी बहन को हेल्प कर सके और उसने अनफॉर्चुनेटली बताया कि ओमिनस को नहीं बताया क्योंकि ओमिनस इसके बारे में नहीं समझ सकता। पर हमने बोला नहीं, हमें ओमिनस को बताना बहुत ज़रूरी है। पर सेबेस्टियन ने बोला कि जब बराबर वक्त आएगा और हमको वो रेलिक मिल जाएगा तब ओमिनस को हम लोग बता देंगे और ओमिनस इस बारे में समझ भी जाएगा। बट जैसे ही हम इस बारे में बात करके ख़त्म हुए, ओमिनस की एंट्री होती है एंड ओमिनस ने तब तक हमारी सब चीज़ें सुन ली होती है। तो वो सेबेस्टियन के ऊपर वापस एक बार गुस्सा होता है, उसको छूटा बोलता है क्योंकि उन्होंने कसम दी थी आफ्टर सालाज़ार स्लिदरिन के स्क्रिप्टोरियम के बाद
वो कभी डार्क मैजिक के बारे में नहीं सोचेंगे। बट सेबेस्टियन ने बोला, मैंने ये बोला था कि मैं डार्क मैजिक के बारे में नहीं करूंगा, बट मैंने ये कभी नहीं बोला था कि मैं एन के लिए क्योर ढूंढना नहीं बंद करूंगा। और उसके ऊपर ये दोनों की अनबन हो गई और सेबेस्टियन यहाँ से निकल गया अभी के लिए। अभी हमको ओमिनस से बात करके देखना है। Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. What? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. हमें यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली समझ आया। ओमिनस बोल रहा है कि वो बुक से रिलेटेड कोई भी चीज और सलाज़ार स्लिदरिन से रिलेटेड कोई भी चीज इतनी सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं जितनी वो दिखती है। एंड जो सेबेस्टियन के मदर फादर थे वो भी ऐसे ही जिद्दीपना की वजह से डेथ हुई थी उनकी। वो दोनों भी प्रोफेसर्स थे और उनको हमेशा बुक्स पढ़ना और नॉलेज गेन करना पसंद था। तो घर के बेसमेंट में वो अपनी बुक्स पढ़ रहे थे और सेबेस्टियन और उनकी बहन ऊपर के माले में थे। एंड तभी उनको कुछ आवाज सुनाई दी। जब जाके उन्होंने नीचे देखा तो उनके मदर एंड फादर दोनों की डेथ हो गई थी। तो वो डेथ इस वजह से हुई थी बिकॉज जो लैम्प से जो टॉक्सिक निकलता है वो पूरे रूम में फैल चुका था और दोनों की मौत हो गई उसकी वजह से। तो इतना भी कोई चीज में उलझ नहीं जाना चाहिए कि हम लोग भूल जाए कि हम किस लिए कोई चीज कर रहे हैं। तो उसी रेफरेंस में ओमिनस बोल रहा है सेबेस्टियन कुछ ज्यादा ही उलझा जा रहा है उसकी बहन को ठीक करने के रास्ते पे। तो वो चाहता है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी सेबेस्टियन वो बुक से रिलेटेड या फिर वो रिलिक से रिलेटेड कोई बात करता है तो हम जाके ओमिनस को एटलीस्ट बता दे, उसको रोक पाए। क्योंकि ओमिनस बोल रहा है कि पहले ही वो एन को खो चुका है, वो अभी सेबेस्टियन को नहीं खोना चाहता। वो एक अच्छा दोस्त है। तो अभी देखते हैं, जाके मिलते हैं सेबेस्टियन से। उनके पास अगली लोकेशन का क्लू है। Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. अभी हम ऑन द वे थे नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ पे सेबेस्टियन हमसे मिलना चाहता था, पर उसके बीच में उनका एक खत आया कि एन की तबीयत बहुत खराब हो रही है और वो हमसे मिलना चाहते हैं फेल्डक्रॉफ्ट के पास। तो हम आ गए लोकेशन पे जहाँ पे सेबेस्टियन हमसे मिलना चाहता था। तो जाके देखते हैं वो खंडर में क्या है। You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. सो एक स्टूडेंट था जो ये रेलिक के बारे में स्टडी करना चाह रहा था एंड वो यहाँ पे आया भी था एंड उसको वो रेलिक मिला भी, बट वो रेलिक वो यहाँ से ले जा नहीं पाया। यहाँ पे लिखा है उस हिसाब से उसको कुछ पावर फील हुआ था वो रेलिक से। एंड सेबेस्टियन चाहता है कि हम जाके वो रेलिक ढूंढे
पॉसिबली, और हमें वो मिले, ताकि वो चाहता है कि एन को उससे हेल्प होगी। एंड उसने हमें ये भी पूछा कि क्या ओमेनिस ने हमसे कुछ पूछा, बिकॉज ओमेनिस हमारे बारे में बहुत पूछ रहा था। तो हमने अभी तक ओमेनिस से तो मिले नहीं, तो हम रेडी है ये गुफा में जाके चेक करने के लिए कि अंदर क्या है क्या नहीं। चलो जाके देखते हैं। I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. गंदा स्मेल आ रहा है, मे बी डेड बॉडीज का स्मेल है। All this grass, it no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. बंदा बोल रहा है कि मेरे को भी ऐसी जगह पे दफन किया जाना चाहिए, ग्रैंड वाली। पागल लड़का है, पागल। यहाँ पे जो बोन्स है उसको जाके स्टडी करना चाहता है बंदा। There's something here by the altar. Here. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. ओके, तो यहाँ पे शायद, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें ये कमान कंप्लीट करनी पड़ेगी। Did you hear that? Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. सेबेस्टियन को कुछ सुनाई दिया और हमारी कैरेक्टर बोल रही है कि हम ऐसी जगह पे है जहाँ पे थोड़ा सा आवाज भी बहुत कुछ सुनाई दे जाए। Wingardium Leviosa. ओह, एम्पेरियस कर्स सीखना पड़ेगा अगर हमें What did you वो find? डोर ओपन करना है। जो स्टूडेंट था उसने ये कांड किया हुआ है, उसने ये जो बोन्स है उनको यहाँ पे लगाया, और इस आगे अगर हमें जाना है तो हमें इम्पेरियस कर्स सीखना पड़ेगा। बाप रे। Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. नहीं, नहीं। Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. कुछ तो गड़बड़ तो है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई स्टूडेंट ने छोड़े हुए नोट्स है। मुझे लग रहा है सालाज़ार स्लिदरिन ने खुद रखे हुए हैं, ताकि जो भी इसको ढूंढते हुए आया रहेगा वो ये कर्स सीखे या फिर करे आगे जाने के लिए। बाप रे, ये बहुत ही डेंजरस होते जा रहा है धीरे धीरे। पता नहीं, कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master.
ओके, सो हमने इम्पेरियो स्पेल सीख लिया है जिसमें हम दूसरे के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने सेबेस्टियन से पूछा कि तुम्हें इस स्पेल के बारे में कैसे पता, तो सेबेस्टियन ने बोला मैं खुद से सीखा हूँ। डैम। और उन्होंने बोला कि इसके बारे में ओमिनस को बिल्कुल मत बताए। Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Wingardium Leviosa. Accio. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Crucio. Confringo. Imperio. Confringo. Tego. Leviosa. Bingo. Baad. Leviosa. Reductio. Confringo. Bombada. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Accio. Confringo. Bombada. Not sure what I did to deserve that. Reducto. Accio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. पूरा का पूरा ये जगह सड़ चुका है। हमें नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई आया है बहुत टाइम से।
I see why Slytherin's student was so entranced with this place. कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। For a moment there, I thought that'd never end. बड़े बड़े स्पाइडर लोग के साथ झगड़ने के बाद आई होप अभी और ज़्यादा स्पाइडर्स ना हो यहाँ पे। Confringo! Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. ओह, ऐसा कुछ है वो relic। Sebastian, the relic! Look! Could it be? वाह, ओके। सो ये relic में काफ़ी पावर भरी जा सकती है और इसके पॉसिबिलिटीज बस विजार्ड कार्ड को नहीं तो पूरे वर्ल्ड को हेल्प करने के लिए काफ़ी है। बट ये relic के लिए डार्क सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है ऐसा बोला जा रहा है और वो करना काफ़ी हार्ड है। जब तक हम एक्स्ट्रा नहीं जानते तब तक ये relic को यहाँ से मूव करने के लिए मना कर दिया गया है। देखते हैं अभी सेबेस्टियन क्या बोलता है। हमें सेबेस्टियन से बात करनी पड़ेगी ये चीज़ से रिलेटेड। The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. तो relic लेने से मना किया गया था बट बंदे ने relic उठा लिया है फिर भी और बोला हम वापस फेल्डक्रॉफ्ट जाते हैं और मेरे अंकल को इस बारे में कुछ मत बताना ऐसा उसने बोला। ये फंसाएगा हमें। ओह ओमिनस यहाँ पे कैसे तो भी पहुँच गया है। Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. वाह, ओमिनस यहाँ पे पहुँच गया और ओमिनस बोल रहा है कि भाई जब तक तुम वो relic वापस नहीं रखते तब तक मैं तुमको जाने नहीं दूंगा और सेबेस्टियन बोल रहा है कि मैं फाइट से पीछे नहीं हटूंगा। अभी हमें ओमिनस से बात करनी पड़ेगी। How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Oh shit. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. हमने ओमिनस को मना लिया है कि इसके बाद और कुछ नहीं करेंगे ये relic से रिलेटेड या फिर कोई भी डार्क आर्ट चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ओमिनस का क्लियरली बोलना यह है कि वो चाहता है कि हम ये relic को यहीं पे छोड़ दें। पर हमने बोला तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए ये चीज़ को यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। सेबेस्टियन को relic के साथ निकल जाने दो, पर इसके आगे हम उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे ये चीज़ से रिलेटेड। तो इसके लिए ओमिनस मान गया और इसके साथ साथ वो बोल रहा है कि मैं तुम पे भी ट्रस्ट कर रहा हूँ लास्ट टाइम। चलो अभी के लिए यहाँ से तो बाहर निकलते हैं। Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise.
Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. सेबेस्टियन अभी हम पे भी भरोसा नहीं कर रहा है. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. हमने सेबेस्टियन को बताया कि ओमिनस और हमने एक सुलह कर लिया कि इसके बाद और कुछ नहीं, पर सेबेस्टियन को फिर भी हम पे ट्रस्ट नहीं कि हर बार हम ओमिनस से बात करते हैं और एक सेकंड में वो मान जाता है. और सेबेस्टियन यहाँ पे बोल रहा है ओमिनस से वो कुछ पाना नहीं चाहता है, बट ओमिनस नहीं समझेगा कि वो ये क्यों कर रहा है. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. बंदा बोल रहा है कि ओमिनस ने जाते वक्त उसको कुछ एक्नॉलेज भी नहीं किया, हाय बाय टाटा सी यू कुछ नहीं, तो वो ऐसा पहले तो नहीं करता था. तो हमारे कैरेक्टर ने उसको समझाया कि देखो वो बहुत चीज़ों के थ्रू जा रहा है, तुम उससे झूठ बोल रहे हो व्हाटएवर. पर सेबेस्टियन वही बोल रहा है कि वो कभी समझ के नहीं लेगा इस चीज़ को कि ये सब वो एन के लिए कर रहा है. दोस्तों के बीच वाला ये जो टकराव है ना, एक बचाना चाह रहा है और दूसरा उसमें घुसते जा रहा है. ओ शिट, पूरे गांव में आग लगी हुई है. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. सेबेस्टियन बोल रहा है कि इसके बारे में हम एन को नहीं बता सकते कुछ भी, जो रेलिक हमने ढूंढा है. पर यहाँ पे आग लगी हुई है पूरी. देखते हैं क्या हुआ है. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. What an unfortunate disappointment! And patrol! Keep out the way! There's nowhere to go. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. तो अभी हम फेल्डक्रॉफ्ट पहुंचे और फेल्डक्रॉफ्ट पे अटैक हुआ पड़ा था. गॉब्लिन्स अटैक कर रहे थे कम्प्लीटली. हम यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने जितने भी गॉब्लिन्स थे उनसे फाइट किया. एंड एक लास्ट गॉब्लिन आया था जो एन को मारने वाला था, और तभी सेबेस्टियन ने आके इम्पेरियो कर्स का यूज़ करके उसको कंट्रोल किया और वो गॉब्लिन ने अपने आप को मार दिया. पर ये देखने के बाद एन भी काफ़ी डर गई, और जो अंकल है सेबेस्टियन के वो काफ़ी गुस्सा हो गए. उन्होंने बोला कि बेशक तुमने जान बचाई, पर तुमने एक इम्पेरियो कर्स का इस्तेमाल करके अपनी बहन की जान बचाई. उन्होंने कहा तुम हमसे दूर रहो और हमारी फैमिली से भी दूर रहो और एन से भी दूर रहो. बाप रे. अभी के लिए हमने उसको यहाँ से जाने के लिए बोला, तो वो हॉगवर्ट्स गया है. तब तक हम इसके अंकल से एक बार बात करके देखते हैं कि क्या इसके अंकल मानते हैं या नहीं. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone.
That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? ये बंदा नहीं समझने वाला। हमने उसको बोला कि सेबेस्टियन ने ये किया तो अपनी बहन के लिए किया, पर ये बंदा नहीं समझने वाला। इनको लगता है सेबेस्टियन ने वो अनफॉरगिवेबल कर्स यूज करके अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो इन्होंने क्लियर धमकी दिया है हमें कि हम या फिर सेबेस्टियन अगर ये जगह के आजू बाजू भी दिखे तो पर्सनली ये बंदा हमारी कंप्लेंट हेडमास्टर से करेगा। तो चलो जाके मिलते हैं सेबेस्टियन से, वो रुका हुआ है हमारे लिए हॉगवर्ट्स में। उसके बाद हमें जाना है वो जगह पे जहाँ पे सेबेस्टियन बोला कि आगे का क्लू मिल सकता है हमें रिलेटेड टू इसिडोरा का पोर्ट्रेट। Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. तो हमने सेबेस्टियन से बात किया और उन्हें बताया कि उनका अंकल का डिसीजन क्या है। उस पर सेबेस्टियन काफ़ी भड़क गया और बोल रहा है वो कभी नहीं समझेंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि वो रेलिक काफ़ी इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकती है सबके बीच में एन को बचाने के लिए। सेबेस्टियन ने बोला कि एन से मिलने में कोई उनको रोक नहीं सकता है, और कोई क्रेस्ट के बारे में उन्होंने बात किया जो वो एन को भेजेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि सेबेस्टियन उनसे मिलना चाहता है। तो चलो जाके देखते हैं अभी ये पोर्ट्रेट का क्या सीक्रेट है। The wizards will be defeated. You only have Ranrock to blame. हमने इस बंदे को निपटा दिया है, पूरा का पूरा ब्लॉक करके रखा है इन्होंने पूरा पैसेज। हम पहुंच गए मिलने सेबेस्टियन से। वो जानते हैं जो इसिडोरा का पोर्ट्रेट है उसमें और क्या है। Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isidora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Now, shall we see where the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो सेबेस्टियन ने हमको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे रैनरॉक के लॉयलिस्ट्स हैं। एंड वन मोर थिंग, हमारी और सेबेस्टियन की थोड़ी अनबन हुई। हम जब उनको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि कीपर्स ऐसे ही सब चीज़ें नहीं बताते, हमें ट्रायल कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद कोई चीज़ें रिवील होती है, तो बंदा बोलता है कि तुम्हें एन के बारे में उतनी फिक्र नहीं है इसलिए तुम ऐसे बोल रही हो।
तो हमने बोला कि भाई देख, तेरे को बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो बंदा बोलता है कि नहीं भाई, मेरे को बस आंसर्स चाहिए अपनी बहन को ठीक करने के लिए। ओह नो, यहाँ पे वो मशीन ऑलरेडी दिख रही है मुझे खोदने की। यहाँ पे ये मशीन ऑलरेडी काम करनी चालू कर दी है। अरे बाप रे। Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. जो वो अदृश्य घोड़े होते हैं उनको कुछ बुरे होने का संकेत माना जाता है। सेबेस्टियन वही बोल रहा था, पर हमने बोला कि ऐसा हर बार नहीं होता है। I'm sorry we can both see Thestrals. It's certainly not something I'd hoped we'd have in common. हम दोनों भी वो अदृश्य घोड़ों को देख सकते हैं, बिकॉज हम दोनों ने डेथ देखा है। Kill any who trespass. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins, You could have got us killed. but I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. बंदा पूरा रैम्बो मोड में कैंप में भाग गया ये लोग को मारने के लिए। जब से वो रेलिक मिला, ये बंदा अजीब बिहेव करने लग गया है। This doesn't hurt. This must be it. Sebastian, wait. Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. तो हमने बंदे को समझाया कि भाई अगर तुमको काम करना है, तुम आगे नहीं भाग सकते हर बार ये गॉब्लिन्स को मारने के लिए। हमें पता है कि तुम्हारा गुस्सा ये लोग पे ज़्यादा है, बट स्टिल हम एक दूसरे को छोड़ के नहीं भाग सकते, बिकॉज अगर गलती से फिर रैंड्रॉक को भनक लग गई तो फिर हमारे लिए वो बहुत गलत बात हो सकती है, जैसा कि लॉर्ड बॉब ने बोला था। तो कहीं ना कहीं सेबेस्टियन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो शायद समझ गए हैं इस बार कि वो हम सबको खतरे में डाल सकते हैं आगे भाग भाग के। एंड हमने ये भी बताया कि रैंड्रॉक हमसे एक स्टेप ऑलरेडी आगे चल रहा है बिकॉज ऑफ जो नॉलेज उनको मिला हुआ है सब कीपर्स के या निसेडोरा के बारे में। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ये टावर में एक्चुअली है क्या। A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. कोई यहाँ पे बहुत टाइम से नहीं आया ऐसा लग रहा है। क्या चीज़ का आवाज़ है भाई ये? Look at this place. Not really my style. A bit much if you ask me. वाह, क्या है ये? मर्लिन का यहाँ पे पुतला है। अरे यार कितने स्पाइडर्स है यार इधर।
Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. इसको देख के ऐसा ही क्यों लग रहा है कि ये दूसरा हॉगवर्ट्स है? I'd imagine we need to find all 3 rune symbols to open the door. Can't get out of here quick enough. पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त फाइट होने वाला है। ओह शिट। पूरा का पूरा ब्रिज गिरा दिया भाई। Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. भाई साहब, That was a piece of work. More than one. ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा का पूरा हॉगवर्ट्स ही है? Did you find something? A journal entry. Isadora was here. तो ये नोट में इसाडोरा बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अपने फादर को हेल्प किया उनके दुख से मुक्त होने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि प्रोफेसर रैकम या और कोई मुझे बताने वाला कौन होता है कि मैंने अपने पावर्स के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो इसमें ये भी बोल रही है कि जो हेडमिस्ट्रेस नीव है वो कुछ हिसाब में उनसे सहमत लग रहे थे। सो उन्होंने बोला कि बराबर टाइम आने पर वो उनसे हेल्प मांगेंगी और वेट करेंगी कि उनके जैसे पावर का कोई उनसे मिले जो हम हैं। बेसिकली 100 साल के बाद हम आए हैं। I'm out of breath after all of those stairs, but the view, well worth it. यहाँ पे वो बोल रही कि वो हर बार जब ये पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें और स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। Good news? This journal entry sounds worrisome. और उन्होंने बोला है कि जो पावर वो कंज्यूम नहीं कर सकते वो पावर वो बंदी होल्ड कर रही है, और उसके लिए उन्होंने एक रास्ता चुन लिया, ऐसा उनका बोलना है। This place can't have belonged to only Isadora. The triptych pointed us here. जो मेरा शक था वही हमारा कैरेक्टर भी बोल रहा है कि ये बस इसाडोरा का घर नहीं हो सकता, ये काफी हॉगवर्ट्स लाइक फील हो रहा है। Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट मेमोरी था नीट के ट्रायल में वो कहीं ना कहीं इनके लेटर में भी दिख रहा है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं हेडमिस्ट्रेस भी उनके ख्यालात को नहीं समझ पा रही है एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड है। वो बोल रहे हैं शायद मैं यहाँ पे अकेली पड़ गई हूँ और वो शायद वेट कर रही है हमारा कि हमारे जैसा कोई आए, बट उनको यहाँ पे सीधा सीधा फील हो रहा है कि शायद उनके लाइफ टाइम में हमारे जैसा कोई और आने नहीं वाला, इसलिए उन्होंने ये पूरे क्लूज छोड़े थे ताकि उन तक जो कोई भी नेक्स्ट आए वो पहुँच सके। I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. सो हमने अभी वही बताया सेबेस्टियन को कि जितने मेमोरीज हमने देखे उससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाती कि इसाडोरा और कीपर्स एक दूसरे से बहुत सहमत नहीं थे। सेबेस्टियन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि शायद अगर तुम उसकी मेमोरीज देख सको तो कुछ मजा आए। The final canvas piece of the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. सेम चीज़ यहाँ पे बोली जा रही, काश हम उनकी एक आध मेमोरी देख सके जिससे पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज वो इतना छुपा छुपा के हर चीज़ शेयर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा उनके बारे में भी। चलो तो हम शायद से वापस अंडरक्राफ्ट में जाने वाले और वो जो उनका पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। हमें उनका पोर्ट्रेट का फाइनल पीस भी मिल चुका है। I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out.
cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Well, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes.
I'd better find him. यहाँ पे पोर्ट्रेट लगाने के बाद इसिडोरा तो नहीं आया पोर्ट्रेट में, पर जो मेमोरी हमने पहले भी देखी थी कि वो अपने फादर से इमोशंस ले लेती है, पेन ले लेती है, फिर एक जार में रखती है, तो वैसे बहुत सारे जार्स में उन्होंने पेन रखा हुआ है ऑलरेडी। और वो ब्रैकबोर से बात करते हुए दिखाया है कि ब्रैकबोर और वो बात कर रहे हैं कि गॉब्लिन सिल्वर में वो मैजिक फिट आ रहा है एंड वो चाहती है कि इससे बड़ा कुछ बनाए। तो ब्रैकबोर उनसे जानते हैं कि क्या छुपाएंगी, क्यों छुपाएंगी, और इसरा बोलती है कि जब तक मेरे जैसा कोई और नहीं आता तब तक उसको सिखाने के लिए मैं रख रही हूँ, जब तक बाकी के कीपर्स नहीं समझते तब तक मैं वो रख रही हूँ। और ये मेमोरी हमने और सेबेस्टियन ने साथ में देखा, तो इससे सेबेस्टियन बहुत खुश हो गया कि अरे इसने तो अपने फादर से पेन ले लिया है। एंड एज आप सब लोग जानते हैं कि वो इसको देख रहा है कि हम एन का पेन ले सकते हैं। फिर हम इसके बारे में बोलते हैं कि भाई हम तो नहीं जानते ये कैसे करना है, इसेडोरा जानती थी पर हम नहीं जानते। और ये स्पेसिफिक पोर्ट्रेट शायद से कीपर्स ने डैमेज किया है ताकि इसेडोरा दूसरों से ना मिल पाए, हमारे जैसे लोगों से जो एक्चुअल एंशिएंट मैजिक करना जानते हैं। तो सेबेस्टियन बोलता है कि भाई वो तेरे को इस चीज से दूर रख रहा है एंड यू शुड गो एंड टॉक विद देम, तुम्हें उनसे ये चीज सीखनी पड़ेगी, क्या तुम एन के लिए ये चीज करोगे। तो हमारा जो कैरेक्टर है नॉड करता है, हाँ नहीं बोलता है, उससे वो थोड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें लॉर्डगॉक का मेल आया। उस मेल में लॉर्डगॉक बोल रहा है कि उनको कोई ड्रिल मिला है, उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। अगर हम वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचे तो वो ड्रिल डिस्ट्रॉय करने के बाद हमें मेल करेंगे और कुछ उनको मिला है जो वो हमें देना चाहते हैं। अभी वो क्या है हमें नहीं पता, पर हमें जाके उनको ढूंढना पड़ेगा बिकॉज वो अकेले बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, पर याद रखिए कहानी यहाँ पे रुकती है और ख़त्म नहीं होती। तब तक के लिए याद रखिए इस चेहरे को।